Assalamu alaikum friends, welcome to our YK360 YouTube channel. In this video we are going to continue our question and answer session for our work permit receiver exam. We have already completed 2 videos in this topic. We have almost covered 20 questions. In this video we will continue the session. If you didn't watch the previous video, you can watch in our playlist Saudi Aramco in our YouTube channel. Okay, now let's move on to our 21st question. When required to ensure job site safety, additional precautions should be listed in the dash section of the work permit. When required to ensure job site safety, additional precautions should be listed in the dash section of the work permit. This is the question. Actually, what is the question? While writing the work permit, issuer where the issuer will write the additional precautions. This is the question. While writing the work permit, where the issuer will write the additional precautions. This is the question. First you need to understand the question. Okay, for this question I will show you the work permit so that you can easily understand. This is the Aramco work permit, and in the section 1 and the section 2 there is an column, there is an I option. You can see here, I will show you here. There is an option, list any additional safety precautions. This is the area the issuer will mention the additional safety precautions. Okay, this is the area the issuer will mention. So the answer is additional precautions. अभी मैं हिंदी में बताएगा. हम लोग परमिट लेने का टाइम इशूअर कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस है तो किधर कौन सा जगह में वो लिखेगा ऐसा पूछ रहा है. वो परमिट में एक जगह है अंडर सेक्शन 2I, लिस्ट एनी एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस, इधर ही लिखेगा. ठीक है, इधर ही लिखेगा ये जगह में. ओके, नाउ लेट्स चेक द 22nd क्वेश्चन. व्हाट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ कन्फाइंड स्पेस डेथ? What is the number 1 cause of confined space death? So you understand the question, right? What is the cause of the confined number 1 cause of the confined space death? It's none other than H2S, hydrogen sulfide poisoning. H2S, hydrogen sulfide, is the major cause of confined space death. So I will explain in Hindi. अभी कॉन्फिडेंस स्पेस का अंदर ज़्यादा आदमी मर जा रहा है, उसका क्या मेन रीज़न क्या है? कॉन्फिडेंस स्पेस का अंदर का डेथ ज़्यादा हो रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न हाइड्रोजन सल्फेट H2S गैस है. H2S गैस, अक्यूमुलेटेड H2S गैस अंदर है तो आदमी लोग अंदर जाएगा, वो करेगा तो मर जाएगा. ठीक है, वो इनहेल करेगा तो वो अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो मर जाएगा. वही प्रॉब्लम. ठीक है, इसके इसीलिए पूरा H2S चेक करके वो गैस टेस्टर का साथ चेक करके ये T40 अंदर पूरा टाइम रुको कॉन्फिडेंस फेस में. ओके, नाउ लेट्स चेक द 23rd क्वेश्चन. What type of work permit is required for a worker to enter an excavation which is greater than 4 feet deep? What type of work permit is required for a worker to enter an excavation which is 4 meter deep, 4 feet deep? So for excavation we need only cold work permit. Okay, with only hand tools like shovel we need only cold work permit. If the excavation depth is goes greater than 1.2 meter deep, we need a confined space entry permit. So if an excavation is greater than 1.2 meter, it will be considered as an confined space. So we will need confined space entry permit. 1.2 meter is equal to 4 feet. So for above 4 feet we need a confined space entry permit. अभी मैं हिंदी में बताएगा. हम लोग गड्ढा बना रहा है, ये गड्ढा बना रहा है, उसके लिए क्या परमिट चाहिए? खाली कोल्ड वर्क परमिट चाहिए. वो 4 मीटर का ज़्यादा हो गया तो उसका कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए. ठीक है, वो 1.2 मीटर का ज़्यादा हो गया तो उसका आराम को क्या बोलता है? कन्फाइंड स्पेस बोलता है गड्ढा का. इसलिए उसका कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए, स्टैंड बाय मैन चाहिए, बराबर एक्सेस चाहिए, सब चाहिए. ठीक है. Okay, now let's check the 24th question. If you are working on a job and smell gas, you should. If you are working on a job and you smell gas, what you should do? This is the question.
When you work in the site, if you smell any poisonous gases, what you will do? This is the question. Stop work, get out of the area, and notify the issuer. Answer is we will stop the work and we need to go out from the area and we need to inform the issuer, notify the issuer. It's simple. We will do this the same. It's simple. Everyone can answer this question. अभी मैं हिंदी में बताएगा. हम लोग काम करने का टाइम कुछ गैस का स्मेल आएगा तो क्या करेगा. हम लोग क्या करता है, काम बंद करता है, वो जगह से बाहर निकलता है, ईश्वर का इन्फॉर्म करता है, वही है. ठीक है. ओके. इजी. Okay, now let's check the next question. When a welder and an electrician work on the same system or equipment, each that is the question. You need to check the option for this question. Okay, each craftsman must have its own permit. A superintendent must countersign the permit. No joint inspection is required. One permit covers all craft. So the question is whether the welder and an electrician can work in the same permit or not. This is the actual question. But they cannot work in the same permit. Okay, they need a separate permit. Each craftsman must have its own permit. But in some cases, if your issuer allow, if there is a small electrical job, no problem. But it's a major electrical job like a transformer installation or a conduit installation and a welding job nearby, you need a separate permit. Okay, if there is a small electrical work like you need to change some lights or bulbs like that, only 5 minute job, no issue. This based on your issuer. So I will explain in Hindi. अभी एक वेल्डर एक इलेक्ट्रीशियन दोनों का काम है एक जगह में, उसके लिए एक परमिट में हो जाएगा ऐसा पूछ रहा है. नहीं हो जाएगा. ये एक क्राफ्ट्समैन का अलग एक परमिट चाहिए. वेल्डर एक क्राफ्ट्समैन है, उसका अलग वेल्डिंग का परमिट चाहिए. इलेक्ट्रीशियन एक क्राफ्ट्समैन है, उसका इलेक्ट्रिकल का काम का दूसरा परमिट चाहिए, ज़रूरी है. ठीक है. Okay, now let's check the next question. The receiver normally receives a work permit from dash. Actual question is from where, from whom you will get the work permit. This is the question. Answer is from the certified operation supervisor. The issuer will be a certified operation supervisor. ओके, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन. मैं अभी हिंदी में बताएगा. हम लोग परमिट लेने का टाइम किससे लेगा परमिट, वही क्वेश्चन है. उसका आंसर वो सर्टिफाइड ऑपरेशन सुपरवाइजर से लेगा. वो ऑपरेशन सुपरवाइजर कौन ईश्वर का कार्ड है वही परमिट दिएगा. ठीक है. ओके. ओके, नाउ लेट्स चेक द 27th क्वेश्चन. A dash is required when there is a potential for the release of hazardous gases. A dash permit, actual question is a dash permit is which permit is required when there is a potential of for the release of hazardous gases. Actual answer is EOLB permit, equipment opening line break permit. In this case they mention all the permit and they change the name of the EOLB permit, release of hazard liquids and gas permit. Actually this is the name which is the before they will be permit, they are called as release permit, so they mention like this. Actual answer is equipment opening line break permit. Okay, if the option is not available and the release of hazardous liquids or gas or permit available, you please click this answer. Okay, I will tell in Hindi. कौन सा परमिट चाहिए हम लोग, कोई कुछ गैस रिलीज होने का चांस है तो कौन सा परमिट हम लोग का चाहिए. हम लोग एक काम करता है, वो काम में कुछ गैस रिलीज का चांस है तो हम लोग कौन सा परमिट लेना चाहिए, वही क्वेश्चन है. उसका आंसर है, एक्चुअल आंसर है अभी हम लोग का EOLB परमिट चाहिए. ठीक है, लेकिन ये तो पुराना है. ये ऑप्शन रिलीज ऑफ हजार्ड लिक्विड और गैस और परमिट पुराना नहीं है, वो तो ऐसा कंफ्यूज भी करता है. ठीक है, रिलीज परमिट भी बोलता है EOLB का, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो EOLB नहीं है तो रिलीज परमिट. दोनों में कौन सा आंसर है तो भी वो टिक कर दो. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेगा 28. या वर्क परमिट में बी एक्सटेंडेड फॉर वन एडिशनल ऑपरेशन शिफ्ट इफ
ये क्वेश्चन हम लोग पहले देगा. This question we already checked before. If work permit may be extended for one additional operation shift if both the issuer and the receiver accept the condition and they sign the permit. Okay, this is the answer. The new oncoming issuer and the receiver agree on condition and sign the permit. Already we have checked this question before. This question is a repeated question. Sure, this question will be in your exam. Okay, 100% sure this question will be again in the exam. ये हिंदी में बताएगा. आप लोग परमिट एक्सटेंड करना चाहिए तो क्या करेगा ऐसा पूछ रहा है. ये वो इशूअर रिसीवर दोनों मिलके साइट पूरा चेक करके वो लोग का कंडीशन पूरा ओके एक्सेप्ट है तो वो लोग साइन करके परमिट रिन्यू करेगा. वही हम लोग पहले ये क्वेश्चन देखा, ये सेकंड टाइम है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29th question. When can a receiver leave a job site? When can a receiver leave a job site? When the issuer has given permission in advance. Okay, when the issuer has given permission in advance. So actually the receiver need to close the permit and then only he can go from the job site. Okay, otherwise the issuer need to give permission. If he is not possible to come to the site and close the permit, the issuer need to give permission so that he can leave the job site. Okay. Now let's check the last question. Where are the work permits required? This question already we have checked before. Where are the work permits required? All the Saudi Aramco areas. Same. Okay, we have completed 10 questions in this session. If you have any doubt, you please comment. If you need a detailed video in the work permit, how to write the work permit, how to understand the permit, and what are the things in the permit, how to uh, check the permit and how to understand the permit, you please comment yes in the comment section. I will make a video in detail about the work permit in detail. Okay, if you have any doubt you can ask in the comment, and also if you need the PDF file you can check the description. Thanks for watching. Have a great day.